हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन को आगे कर रहे हैं। जो हमारा बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं, संभावित क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनके हम लेक्चर्स वीडियो डाल रहे हैं। अब इसमें चैप्टर 7 का ये 4th लेक्चर है आज। ओके, ऑन इंटीग्रल्स। ओके, तो इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप, 1 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स, एंड देन लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आल्सो। तो लाइक दिस सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस we are doing. So now question 1 is sin cube x into cos power 4x dx from the integrals. Okay, now solution of this, you think here okay, any one substitution and other will go in dt. So now here if power even power even जिसकी है उसको लेट करें, ध्यान रखना, लेट cos x, okay, let cos x is equal to t, then differentiate cos x का डेरिवेटिव minus sin x and t का dt by dx, तो dx will come this side, minus sin x dx is equal to dt. Okay beta, now this you understand कि substitute cos x value t and then sin x is dx, तो वन sin x इसमें से इसके साथ नहीं है, तो इसको we can write sin square x into sin x and into cos power j. So this we can write t cos x is t, then t power 4 and into sin x dx. Okay, sin x into dx. तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt हो जाएगी, तो माइनस आउटसाइड, ओके बेटा, माइनस आउटसाइड and this sin square x value 1 minus cos square x we can write. For question we have to substitute by the this that cos x is equal to t, then 1 minus cos square x we can write sin square x को and into t power 4 as it is and into sin x dx value minus dt, तो minus out into dt. This we can replace the question by the substitution method in the new variable t. Then 1 minus cos square x, cos x is t, तो 1 minus t square, तो integral minus out from the full and integral of 1 minus t square, okay, cos x is t and into t power 4 dt. Okay, so like this. Now after that, in multiplying side t power 4 into 1, t power 4, so minus out and t integral of t power 4 dt. Okay, and minus and this minus plus, minus and minus plus, and t power 4 into t power 2, then t power 6 dt. Okay beta, so like this easy to integrate. Then after that, our formula x power n integral x power n plus 1 divided by n plus 1. So here minus t power 5 upon 5 integral of t power 4 plus similarly this t power 7 upon 7 plus integral constant c. Then replace original t value और original cos x,
तो cos पावर 5x तो माइनस cos पावर 5x डिवाइड बाय 5 and plus t power 7 means cos power 7x cos power 7x divided by 7 plus integral constant c. This is your integral. Okay, like this we can do. Now next question. Yes. Now next question, beta. Question number 2. What is that? Find integral 1 minus cos x upon 1 plus cos x. If like this question, how can you do? Then conjugate you can use here. Multiply 1 minus cos x से multiply किया in numerator and denominator. Okay. So this is 1 minus cos x whole square and divide by a plus b into a minus b. So a square minus b square. So 1 square minus cos square. Okay. Multiply by 1 minus cos x in numerator and denominator. This. Then simplify whole square a square plus b square a square plus b square and minus 2ab 2 cos x. Whole square open and divide by 1 minus cos square with sin square. So divide by sin square x separately and divide by sin square x in each term. Okay, and divide by sin square x in each three term. Divide by sin square x and integrate this separately. Okay, then minus dx. This also dx. So integrate separately this also dx. Then this will come 1 upon sin square means cosecant square by trigonometry. Okay, cosecant square x dx and then plus cos upon sin cot then cot square x dx and minus 2 cos x upon sin s cot x and 1 upon sin s cosec x. So cosec x cot x. Cosec x into cot x. So like this, very easy to do. First trigonometry using here. Now integrate on this step. Integrate now. So cosecant square x it is the derivative of cot x minus cosecant square x. Cot x is minus cosecant. So cosecant square x integral minus cot x. This plus c1 constant c1 c2 c3 combined I will write c. Then cot square x how can do cot square x bracket into 2 part cot square x cosecant square x minus 1 by the trigonometry cosecant square x minus 1 dx. Separately we can do this both term. ठीक है
and minus this. This is the sec x, tan x derivative, and cosecant x minus cosec x cot x. So cosec x cot x anti derivative, minus cosec x, minus minus plus 2 cosec x, anti derivative plus constant, integral constant. Okay, now this integral also, then minus cot x, again this minus cot x, cosecant square x, integral minus cot x, because derivative cot x minus cosecant square x. Okay, and then minus 1 dx, then x, and plus cosec x, 2 cosec x, plus constant. Done. So simplify more. We can write only minus 2 cot x plus 2 cosecant x. Okay, and plus x, minus x. Sorry, it is minus x plus c. So this is your answer. We can do like that. Okay, clear? Now one more question next. Yes, next question. Question 3. Find integral 3x square upon x power 6 plus 1. These type of function, some particular functions, integrals are the fixed special integral formula, special type of functions integral. dx upon x square minus 1 है, तो 1 upon 2 a log x minus a upon x plus a plus constant. dx upon a square minus x square है, 1 upon 2 a log a plus x upon a minus x. If x dx upon x square plus a square है, then 1 upon a tan inverse x upon a and plus constant. And if square root, these are 3 square root, 4, 5, 6, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, तो यहाँ ध्यान रखेंगे तो दो लोग के हो गए, tan इनवर्स हो गया. ठीक है बेटा, x square and a square minus x. अब here a square minus x square, then tan inverse, sin inverse, sorry, square root sin inverse x upon a, फिर x square minus a square, फिर log के होंगे, फिर x square plus a square log, log में क्या है, log x plus as it is integral square root x square minus a square as it is function, denominator function as it is, and modulo plus log here, इसमें देखो 1 upon 2 a 1 upon 2 a, फिर 1 upon a, फिर without outside nothing. These, so keep in mind these are important integrals, special functions, we can say particular function. Okay, you should remember these formula. Now using here substitution here first, because it will be x square plus a square formula, this one tan inverse. So we have to make this mat. अब इस 6 को क्या लिख सकते हैं, x cube power square, तो that x cube is equal to t, इससे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x square dx is equal to dt, with respect to x differentiate both sides. ठीक है, this, so this substitution use here, then question will reduce integral of 3x square dx is dt, understand, dt upon x power 6, तो x cube is t, तो whole square both side, then x cube का whole square 3 to the 6, x power 6, okay, is equal to t square, so this is t square, understand, and plus 1.
So now, which one formula? X square plus a square. So using this integral direct, so 1 upon a is here 1. 1 upon 1, tan inverse x upon a, x upon 1, done, plus constant. But here, not with respect to x, with respect to t. Now, original replace here, okay? Then tan inverse, okay? Tan inverse, t value is 3x square was there, and then the t is x cube. So tan inverse x cube plus constant. Done. So like this question, be careful. First making like this formula. Okay. Now one more question we can do. Yes. Next question, beta. Next question is find integral of dx upon square root 7 minus 6x minus x square. तो here a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनाना होगा हमें, ठीक है। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए? तो परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन मेक इफ क्वाड्रेटिक इनसाइड क्वाड्रेटिक, फर्स्ट कॉमन लेंगे, ओके, माइनस कॉमन लेंगे इनसाइड फर्स्ट, ठीक है बेटा, because this term must be positive, x square term must be positive, then inside the square root माइनस कॉमन, बी केयरफुल, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस 7। ओके बेटा, फर्स्ट हमने क्या किया, कॉमन लिया इनसाइड द स्क्वायर। नाउ दिस इंटीग्रल ऑफ dx, नाउ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मेक। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है? मिडल टर्म है ना, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म x 6 है यहाँ, डिवाइड बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 6 डिवाइड बाय 2, देन 3 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 3 ऐड किया एंड 3 सब्ट्रैक्ट किया, ओके। तो 3 ऐड किया होल स्क्वायर, सॉरी बेटा, 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर मींस 9, 9 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो 9 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जो किया हमने, ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। 9 ऐड किया तो ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x और प्लस 9, जो 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें आ जाएगा माइनस 9 प्लस 7, माइनस 9 माइनस 7 16, okay. Now it will come simplest form, it is the perfect square of inside, and यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, ये ध्यान रखना है, आउटसाइड हियर माइनस, सॉरी, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये बनेगा बेटा, ये माइनस 6, ये 4 स्क्वायर बनेगा, देखो ध्यान दो, 4 स्क्वायर, इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या बनेगा, किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड, x प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस चेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 एंड प्लस 2ab 6x, एंड जो माइनस था बाहर, ये माइनस बन गया, और ये माइनस का ये माइनस प्लस हो गया, देन दिस, तो important thing now x plus 3 is t, then derivative of x plus 3, 1 plus 0 1, 1 dx dt, तो dx dt में चला गया, और ये डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रल हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन a, तो डायरेक्ट वी कैन राइट sin इनवर्स x, x is here x plus 3,
x upon a. A is here 4 square, यानी a is 4. This sin inverse x plus 3 upon 4 plus integral constant. This is the answer direct. Okay, so like this we can do. Be careful. One more question. Yes, beta. Next question. Next question. Find the integral of 6x plus 7 whole divided by square root x minus 5 into x minus 4. तो here multiply करके पहले square. Okay. फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर सब्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या बनता है. 6x plus 7 upon this स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x x स्क्वायर माइनस 9x and plus 20. This quadratic form make whole square of this. ठीक है बेटा. और इसका डेरिवेटिव करें, क्या बनता है डेरिवेटिव. 2x plus 9. अंडरस्टैंड. इसका डेरिवेटिव अगर करें 2x plus 9, तो हम एक हमारे मेथड है उसका भी यूज कर सकते हैं. क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड प्लस b इस फॉर्म में. तो हमें ये पहले सॉल्व करना है बेटा. 6x plus 7 is equal to derivative of a into capital A into derivative of this x square minus x square minus this 9x plus 20. One method है a into derivative of the denominator plus b इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया लेट. ठीक है बेटा. तो देन इसको डेरिवेटिव किया, क्या बना a डेरिवेटिव 2x, तो 2ax a की मल्टीप्लाई एंड माइनस 9x का डेरिवेटिव 9, तो माइनस 9a. ओके. एंड इसका डेरिवेटिव एंड ये 0 हो गया डेरिवेटिव. ठीक है बेटा. डेरिवेटिव 20 0, देन प्लस b. ओके. Now what will come this? Now it is x only here. So coefficient of x is this. To compare coefficients. So comparing coefficient, equating coefficient. X coefficient here right hand. Then 2a is equal to 6. 2a is equal to 6. Then a is equal to divided by 2 3. A value आ गई. Then constant term this is equal to 7. So minus 9a plus b is equal to 7. Okay. Constant term right hand left hand. Then it is a is 3 9 ja 27 plus b is equal to 7. Okay. Then b is equal to plus 27 and 7, so 34. Okay. So this is b. So then we can write instead this. Okay. So what we can write, question reduced into form of that derivative of this a into derivative of this. A is 3, then 3 out into derivative of this is 2x minus 9. Okay. This
and divide by denominator as it is, this as it is, x square minus 9x plus 20 as it is. Then next here only what left here, then this plus b, then plus b, b is your 34 and dx into dx divided by square root x square minus 9x plus 20. Okay, then this integral डायरेक्ट देखो इसको t मान लेंगे तो इसका dt ऊपर है, dt अपॉन t, तो इंटीग्रल हो जाएगा that log t, तो 3 then root t, then 3 integral dt upon root t by substitution, and then this will come परफेक्ट स्केल बना लेंगे, 34 आउट हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका dx अपॉन स्क्वायर रूट, अब नाउ हियर माइनस 9 का स्क्वायर 81 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो it is x plus 9/2, okay, 9/2 का होल स्क्वायर 81/4, 81/4, तो 9/2, 81/4 add and subtract means minus 81/4, तो 24 जा 80 and minus 81, तो minus 1 upon 4 this, then we can write this 1 upon 2 whole square, this we can write. Now integral of this is direct t power minus half, तो divide by minus half, तो 3 log नहीं 3 t power हाफ ऊपर जाकर माइनस हाफ बन गया, माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ and plus this 34 and then x square minus a square without root, x square minus a square, this one, so then this 1 upon 2a into 1 upon 2a, 2a, a is here 1 upon 2, so 2 into 1 upon 2, 2 cancel, and log of this x square minus a square, तो x minus a, तो x is 2x plus 9 upon 2 x, okay, x minus a is 1 upon 2, x minus a upon x plus a, 2x plus 9 upon 2 plus 1 upon 2 plus constant, and simplify this, that will be answer. So t replace original, what we taken t here, what taken x square minus 9x plus 20, so it will come answer will come 3 2 जा 6 into ये 2 पर जाएगा रूट t, यानी रूट ऑफ t मीन्स डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 9x plus 20, this plus answer plus 34 upon 2 से 2 cancel, only 34, okay, and then log of inside simplify,
2 LCM, then plus 9 minus 1, so plus 8, 2x plus 8, 2x plus 8 divide by this 2 LCM cancel, 2 डिनोमिनेटर 2, 2x by 2 वो कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में LCM 2 कैंसिल, then 2x plus 9 plus 1, 2x plus 10, 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं इनसाइड plus constant, okay, 2 common inside numerator में, then x plus 4 upon x plus 5, so final answer this. Okay, like is dependent, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and send the feedback in the comment box. Thank you.